Belavel, since last 15-20 years, for which I've been covering at least the tribal areas from Pakistan point of view, you know, and being a Pashtun, I understand the kind of challenges we face over there. What I'm saying is if the US was unable to cover the entire, I don't know how many tribal agencies you have been to, but the terrain is very difficult terrain, and I'm sure you know about the fences. It was a big challenge, still is a big challenge. Yeah. But what I'm saying, if they are unable to cover it, do you intend to take action in Afghanistan? Because I mean, since your yesterday interaction, I'm getting this feeling that because the moderator asked you this question twice, and I know you answered it in a very nice diplomatic way, but I'm getting this feeling from this trip of yours that this is where things are leading towards, that you have a feeling that TTP is being supported by the At the moment, look, when Imran asked the TTA to help them in a dialogue, they helped them in a dialogue. I will ask the TTA to help us in our operations against the TTP. Not allow them. This is something not just for them. Anybody who's in power over that, and I explain about the hammer and anvil effect. अगर मैं इस तरफ से hammer चलाऊं, तो उस तरफ anvil होने की ज़रूरत है. And I'm sure that happens. And they facilitate us, and they support us, and we manage to get a grip on the TTP. So this is a theoretical question, and the theoretical reality will never arise. If you're asking me to rule out the possibility ever in the future that if TTP attacks keep taking place, and those attacks are not taking place on my soil, but are they coming from somewhere else, and for me to then, in that situation, just sit on my hands and let that keep happening, that is not something that I can condone. So I will continue to emphasize, and it's not just me, it's the TTP is the group that's attacking me, but the ISIK is doing terrorist attacks in Afghanistan. Al-Qaeda has been there for years. So while I'm not here to launch any offensive or announce any offensive, but that's not the purpose of this trip, nor is there any imminent, as far as I'm aware, eventuality for that to do so. And at this time, our entire focus and entire emphasis, even when I sent Wazirkhارجہ to Afghanistan, is to emphasize that the TTP is an issue for us, the TTP is a red line for us, we need to see seriousness on this. It's my right to be able to raise those concerns with that. जो हमारे कराची के अंदर जो दहशतगर्दी 30 साल पहले तो बहुत सारी फोर्सेस ने कराची में आए और उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी है, पीजे कॉलेज है, मिठाई लाइब्रेरी है, औरंगी का स्कूल है, तो नहीं, मेरा जो कराची यूनिवर्सिटी के ब्यूरो चीफ है उन्होंने जाके मालूम किया, तो उन्होंने कहा ये सिंध गवर्नमेंट ने हमें दी। तो वो जो दहशतगर्दी थी वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत होगी। तो आप इस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं कि वो तालीमी इदारे जो हैं वो अभी भी उन्हीं के देखो, मेरा ख्वाहिश ये होगा कि ना सिर्फ तालीमी इदारे में मेरा पीपल्स स्टेडियम भी हमें वापस मिले। दहशतगर्दी के वाक़े बहुत कम हो चुके हैं, हम उस सूरत-ए-हाल में नहीं हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कुछ अफगानिस्तान में होता है, कुछ पख्तूनख्वा में होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है कराची में। सो हमारा बिकॉज मुआशी हालात ऐसे, वैसे मुआशी हालात बुरे थे और बुरे मुआशी हालात में क्राइम रेट्स में इजाफा हुआ, लेकिन सैलाब का भी मुआशी असर है, मज़ीद मुआशी मुश्किलात पैदा हुई हैं, मज़ीद क्राइम रेट्स में इजाफा हुआ। So ultimately we want to get to a point that our civilian agencies and civilian police alone, without the support of the leaders, are capable of at the moment we need to work together. Last question. Yusuf Chowdhury, Dunia Media Group, आपका वायरल स्टेटमेंट लास्ट वीक का जो था प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से, उस पर हमने देखा कि इंडिया में वो पैगाम आ रहा है कोई, और यहाँ भी आपका स्टेटमेंट को अनसरप्राइज्ड स्टेटमेंट के जैसे कि यूज़ किया गया पॉलिटिकली पाकिस्तान में इंडियन दे डोंट ऐसे बल्कि सबकी कीमत मुकर्रर की गई, सबकी कीमत सवाल नहीं
सवाल मेरा यही है कि जहाँ तक मेरा कमेंट था, मैंने एक्सरसाइज किया कि मैं तो काय बात कर रहा हूँ, मैं मेरा अल्फाज नहीं थे, कुछ अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो मेरे पास नहीं, भारत में रहने वाले लोगों को अल्फाज इस्तेमाल था। और मैंने एक बात की, मैंने इस बात को ये नहीं सोच रखी कि बात कर भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सरकार इस्तेमाल और उस सिक्योरिटी काउंसिल को अगर उस पौधा संभालते हुए वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे तो दो पाकिस्तान का वजीरखارجہ बिना जिम्मेदारी है पहले पाकिस्तान के बारे में कहा जाए, मैं उसको जवाब मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे पर्सनल इंसल्ट में आप समझे नहीं महसूस किया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान देशभक्त मुल्क है, देशभक्त सेंटर है, उस्मान का घर है। और मुझे देख रहा हूँ आपसे नहीं, जब से मोदी का हुकूमत आया है, देख रहा हूँ कि भारत दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया है उसका फायदा कैसे वो इस्लाम का लफ्ज़ से मुसलमान कहते हैं, साथ साथ देशभक्त कहते और उसको ना कहते तो ना सिर्फ अपने मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की मैं समझता हूँ कि फेस ऑफ पाकिस्तान मासूम देश के मुतासिरीन शोहरा जो इस देश का मुकाबला करते हैं शहादत होगी वो पाकिस्तान का वो हर जगह अब आप बलावल में स्टेटमेंट रेस किया लगा, मैंने तो 6 साल पहले जब सवाल पूछा था कि Okay, last question I want to ask Mr. that in the house